बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11। A 50 years old male presented in eye department with complaint of decreased vision in both eyes with daylight while reading. The most likely cause of decreased vision is। तो इसका आंसर ये बनता है कि जब पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेट हो, यानी कैप्सूल जो पोस्टीरियर कैप्सूल है लेंस का, तो वो डिक्रीज विजन डे लाइट में जब प्यूपल छोटी होती है तो वो ओपेसिटी सामने आ जाती है। तो ये इसका आंसर है। तो सूचरल कैटरेट, कार्टिकल कैटरेट, न्यूक्लियर कैटरेट में ऐसा नहीं होता, तो लिहाजा जो इसका सी पार्ट है वो ट्रू आंसर है। नॉन इन्फेक्शियस काज ऑफ कंजेनिटल कैटरेट अमंग द फॉलोइंग इज गैलेक्टोसीमिया, हर्पीस सिम्प्लेक्स, रूबेला एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो ये तीनों जो इन्फेक्शियस काजेज हैं, रूबेला भी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी, हर्पीस सिम्प्लेक्स भी एंड गैलेक्टोसीमिया, ये यानी जो ग्लूकोज या ग्लूकोज से रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टोरेज की डिजीज है, लिहाजा ये नॉन इन्फेक्शियस गैलेक्टोसीमिया इसका आंसर है ए। नेक्स्ट 13। A 60 years old male patient comes to you in eye department with complaint of painful loss of visual acuity। हर लफ्ज अहम है, यानी 60 years है, मेल पेशेंट है और उसकी पेनफुल लॉस ऑफ विजन है इन द राइट आई। आफ्टर, कब पेनफुल हुई है? जब इंट्राविट्रल इंजेक्शन ऑफ एंटी VEGF फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक मैकुलर एडिमा 3 days ago। The most probable cause of loss of vision is endophthalmitis, raised intraocular pressure, retinal detachment and vitreous hemorrhage। So answer is endophthalmitis, यानी पेनफुल विजन है, लॉस ऑफ विजन है और उसको इंजेक्शन भी लगा है, तो इसका आंसर बनता है एंडोप्थल्मिटिस। The most appropriate statement regarding the retrobulbar anesthesia is कि रेट्रोबल्बर एनेस्थीसिया ज़ाहिर है किसी प्रोसीजर के लिए जब लगाते हैं तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। एन एक्सियल लेंथ ग्रेटर देन 26 मिलीमीटर in an absolute contraindication is an absolute contraindication। Number 2, can cause globe perforation। Number 3, excessive warfarin anticoagulant is not associated with increased incidence of orbital hemorrhage। Intrathecal spread of anesthetic causes severe tachycardia। तो जो रेट्रोबल्बर इंजेक्शन है उसकी पहली कॉम्प्लिकेशन जो इस सिनेरियो में आती है वो है ग्लोब परफोरेशन। सो आंसर इज बी। A 60-year-old male comes to you in OPD with complaint of sudden painless loss of vision acuity in his right eye। He is known diabetic for 20 years। The most probable cause of loss of vision is central retinal artery occlusion, diabetic macular edema, retinal detachment, vitreous hemorrhage। So सडन लॉस ऑफ विजन जो है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन जब होती है तो उसमें सडन विट्रियस हेमरेज हो सकता है और सडन विजन लॉस हो सकता है और वो पेनलेस होता है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द phacoemulsification with foldable intraocular lens implantation is delayed wound healing, increased risk of wound healing, less astigmatism and large incision। So answer is less astigmatism। फेको की जो सबसे अहम इंडिकेशन है या इम्पोर्टेंस है। A 55 years old female presented in OPD with complaint of decreased visual acuity in the right eye। She is known diabetic for the last 10 years। Best corrected vision 624 in the right eye and 66 in the left eye। Slit lamp showed posterior subcapsular cataract in the right eye and ophthalmoscopically shows a few microaneurysm in the both eyes। The best treatment option is number 1, cataract extraction with implant
After diabetes control, number 2 cycloplegic, number 3 intravitreal anti-VEGF, number 4 pan-retinal photocoagulation. The answer is simple cataract extraction with uh, control of diabetes. A question is right answer. Postoperative complication following phacoemulsification is cystile megaloedema, distant membrane tear, floppy iris syndrome and vitreous loss. तो मोस्ट कॉमन जो है वो सिस्टाइड मैकुलर है. 60-year-old female with history of diabetes comes to you with complaint of decreased visual acuity in both eyes. Best corrected vision is 624 in the 612 in the both eyes. IOP and anterior segment examination is within the normal limit. Fundus shows moderate NPDR in both eyes. The most probable cause of decreased vision in this case is diabetic macular edema. So answer is B. Cottonwood spot, hard exudate, microaneurysm. ये इसके wrong answer है. So the B is the correct answer. Diabetic macular edema. Intraoperative complication during phacoemulsification is miscalculation of IOL, posterior capsular opacity, posterior capsular rupture, and toxic chamber syndrome. Toxic interior chamber syndrome. So answer is here is C. Posterior capsule rupture. Next, a 55-year-old female comes in IOPD with complaint of gradual loss of visual acuity in the both eyes. She is non-diabetic for the last 15 years. Best corrected vision 618 in both eyes. IOP and anterior segment examination is normal. Most probable cause of decreased visual acuity is diabetic macular edema, hemorrhages in four quadrant, NVD, NVE. So the answer is diabetic macular edema. The most appropriate statement regarding the function of the lens is absorption of harmful ultraviolet light, provides 40 diopter effective power, provides accommodation for distance vision, receive blood from the ophthalmic artery. So answer A is correct because it is avascular, इसको ब्लड नहीं चाहिए, प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर डिस्टेंस के लिए अकोमोडेशन नहीं चाहिए होती, 40 डायोप्टर कभी भी नहीं होती, इसकी पावर वो कार्निया की हो सकती है. सो आंसर इज ए. थैंक यू सो मच. अप टिल 22 हमने पोस्ट कर दिए हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा नेक्स्ट 50 तक दोबारा बताएंगे. अस्सलाम वालेकुम.